When we talk about self love, तो एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि when I am in guilt, anger and so much in negative mindset, तो मैं अपने आप को प्यार कैसे कर सकती हूँ? How to be in self love? सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि why are we talking about self love even today? So, to understand that, we need to understand its mechanism of action and how does it work. Let us take an example, a very simple and beautiful example, that suppose I am sick and there are 2-3 possibilities. One is that I am unaware that I am sick, कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है. When I do not know that I am sick, I won't be able to take any treatment. I won't take it. Second possibility is I am aware that I am sick, लेकिन मैं डिनायल मोड पे हूँ, मैं मानती ही नहीं कि मैं बीमार हूँ. आई ऑलवेज से कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. देन थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ आई एम अवेयर, मुझे पता है मैं सिक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बी ओके, आई वॉन्ट टू टेक द ट्रीटमेंट. तो वट वुड आई डू? मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, प्रिस्क्रिप्शन लूँगी एंड बात वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगी. मैं केमिस्ट शॉप पे जाके मेडिसिन भी लूँगी और फिर वहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, घर पे आके मैं मेडिसिन लेना भी स्टार्ट करूँगी. अलॉन्ग विद दैट जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बोली होंगी वो भी मैं लूँगी. एंड अगर मुझे ये बोला गया कि दिस इज़ एन एंटीबायोटिक एंड आई हैव टू टेक एटलीस्ट फॉर 5 days, so I have to complete that course. This is how in that journey when I would do so many things, even then there is a possibility that I won't be completely okay after 5 days. I would again to the doctor and again उसमें possibility होएगी कि मेडिसिन हो सकता है उसकी डोज बढ़ा दी जाए या चेंज कर दी जाए या प्रिकॉशंस और बताई जाएं. आई मीन वट एवर इट इज़, द थिंग इज़ दैट मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू बी ओके. ओनली देन आई वुड बी ओके. Similarly, in self love, when we talk about self love, again there are 2-3 possibilities. One is I am unaware what self love is. तो जब मुझे पता ही नहीं होएगा तो मैं कैसे अपने आप को प्यार कर सकती हूँ. And second possibility is that I know what self love is, but I am in denial mode. There are certain things which I keep on thinking, keep on saying, keep on doing, which shows that I do not love myself. And third is I know what self-love is and whether I love myself or not, but I really want to, seriously want to work on it. I really want to love myself if I have some guidance, if I know what self-love is. So when I know what self-love is and I really want to love myself, I really want to work on it. So there are 2-3 again possibilities to see what are the parameters. How do I know that whether I love myself or not? So we can check. I can check myself at 2-3 levels. First level is at my mind level, my thought process. And second level is what I speak, what words do I use when I speak. And third possibility is what I do. So on these 3 levels I can check myself whether I love myself or not. For example, thought process, okay, we will talk about it later. Let us talk about what we speak. I say for the sake of saying that I love myself. मैं तो अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ. But when it comes like what I say all day long, I keep on saying मैं सारा दिन अपनी फैमिली के लिए करती रहती हूँ, मैं तो दूसरों के लिए करती रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ. I all day long I keep working for my parents, I keep working in the office, I keep working for the people, for everyone in the family. But I do not have time for myself. Just check if I am saying
such statements all day long, it is a parameter, it is an indication that I do not love myself. Secondly, okay, I do not use such words even, such statements even, and I say that I love myself. मैं सबको बोलती रहती हूँ खुद को प्यार करना चाहिए, खुद को करना चाहिए, और मैं भी करती हूँ. See, I love myself, but in my mind I keep thinking all these statements. अरे क्या है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं लगता, अपना मैं हॉबी नहीं कर सकती, मेरे से जिम नहीं जाया जाता, मेरे को सिंगिंग कितनी पसंद है, मेरे को तो म्यूज़िक सुनने को नहीं मिलता, मैं अपने पेरेंट्स के लिए करती रहती हूँ, फैमिली के लिए करती रहती हूँ, घर पे कितने काम होते हैं, फिर ऑफिस जाना होता है. आई कीप ऑन सेइंग दीज स्टेटमेंट्स इन माई माइंड इवन. सो इफ़ आई एम डूइंग दैट, even this is the indication that I do not love myself. And third level comes my actions. Now in my actions, I am always in a hurry. I have no discipline. I have no time plan. I am always late everywhere, and I am not able to take care of my body. I am not exercising. I am not healthy even. I do not take food at right time. Nutritious खाना नहीं ले पाती, time पे नहीं ले पाती, So if my actions are such, this is also an indication that I do not love myself. So these are the levels we can check that whether I love myself or not. Now, suppose I know that I do not love myself because these are the things in me, whatever we discussed right now. Then I need to know what self-love is. It means we do not know even what self-love is. So there must be a definition of self-love. So let us make a definition of self-love and then see what to do and what not to do. And if I really want to love myself, what are the things which are required, which are mandatory, or what are the prerequisites? वो चीज़ें कौन सी हैं जिससे कि हमें ये पता हो कि हम अपने आप को प्यार करते हैं. So अगर हम ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सेल्फ लव है क्या और what is its definition. So definition of self love is to accept your own self irrespective of the positive or negative tags by your own self or by the others, and to stand by your own self, and to be ready to change for the betterment so that you become the better version of you at a given point of time. So there are 2-3 parts to this definition of self-love. Let us discuss one by one. First part is self-love is to accept who you are irrespective of the positive or negative tags by your own self or by others. What does this mean? It means I know my strengths, I know my weaknesses. मेरे को अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों पता हैं, and whatever खूबियाँ या ख़ामियाँ मेरे में हैं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ. And sometimes हम अपने आप को पॉजिटिव टैग्स लगा देते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जब पता होता है. देन वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल. हमें फ्लेक्सिबल क्यों होना है? क्योंकि सो दैट हमारे में ईगो ना आए, सो दैट हम इंसान को इंसान समझें. इसलिए हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे में कौन सी स्ट्रेंथ है. Similarly, if I have weakness in me and I have a tag of any weakness, again I have to be flexible. क्यों? Because अगर flexibility रखूँगी, rigidity नहीं रखूँगी, if I won't be rigid, only then I would be able to change myself, to inculcate positivity or positive traits in me. So in both the cases, I need to be flexible with my strengths and my weaknesses. This is meant to be to accept myself. इसका मतलब होता है कि मैंने अपने आप को accept कर दिया. And the second part to this definition of self-love is to stand by your own self. कि whatever you are,
अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खुद खड़े होना किसी भी सिचुएशन में. सो इसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोई इंसान आता है, वो मुझे कहता है कि डॉक्टर बॉबी यू लुक ओवरवेट, आप ना मोटे हो गए हो या मोटे लग रहे हो. अब इस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके होंगे कि जो मैं उनको इस स्टेटमेंट के लिए रिएक्ट करूँगी. वन इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करूँगी. उसमें क्या करूँगी? बिकॉज मुझे वो स्टेटमेंट नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पता है आई एम नॉट ओवरवेट, आई नो द रियलिटी, मैं ओवरवेट नहीं हूँ. एंड उसको रिएक्ट करने के लिए सपोज़ मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, रिफ्लेक्शन, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो उसमें क्या होता है कि उसने तो एक स्टेटमेंट बोली है और हो सकता है मैं 5-6 स्टेटमेंट्स में उसको जवाब दूं कि ख़ुद को क्या समझता है, खुद का टमी देखा है, खुद कितना मोटा है, कितना खाता है, पता है नहीं, पता नहीं इसकी नज़र ख़राब है, ये वो, आई वुड से सो मेनी थिंग्स. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, कि मैंने रिफ्लेक्ट किया उस चीज़ को, विच इज़ रॉन्ग. एंड सेकेंड वे टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट इज़ टू टेक दैट स्टेटमेंट, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, उसको एब्जॉर्ब कर लिया. आई टुक दैट पर्सन स्टेटमेंट. अब इसमें क्या है, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, रूडली बात नहीं करनी चाहिए किसी से. मैंने बोला तो नहीं, लेकिन मैं अपने दिमाग में वो सारे स्टेटमेंट्स बोली जा रही हूँ. खुद को देखा है, खुद कितना मोटा है, पता है नहीं इसको, देखना आता नहीं है, इसने मुझे देखा तो है नहीं, मोटे पतले की डेफिनेशन तक तो इसको पता नहीं है. लाइक आई वुड कीप सेइंग दोज स्टेटमेंट्स बट इन माई माइंड. सो विच इज़ कॉल्ड एब्जॉर्ब कर ली मैंने, उसकी स्टेटमेंट को ले लिया. हम कहते हैं आई डू नॉट टेक योर स्टेटमेंट, बट यहाँ पे आई टुक दैट पर्सन स्टेटमेंट विच अगेन इज़ रॉन्ग. And now third way to respond or react is transformation. Transformation is अगर हमें वो नेगेटिव लगा, हमें वो अगर उसकी स्टेटमेंट रूड लगी या अच्छी नहीं लगी और जो कि रियलिटी भी नहीं है, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म प्यार से कैसे कर सकते हैं? आई कैन मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. मैं आराम से बात कर सकती हूँ कि तुम्हें पता है, तुमने मुझे 7-8 महीना पहले देखा था क्या? अगर नहीं देखा था तो मैं बताती हूँ कि मुझे तब ना हेल्थ इश्यूज़ थे, तब ना मुझे कुछ भी था, शियाटिका पेन चल रही थी या कुछ था, मैं तो मूव भी नहीं कर सकती थी, मैं तो वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, और उसकी वजह से मेरी एक्सरसाइज नहीं होती थी. लेकिन भूख तो लगती है, लेकिन खाना पीना वैसे ही चलता रहता था. तो मैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था. लेकिन फिर मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए. धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, और तुम्हें पता है इतने 6-7-8 मंथ्स के पीरियड में आपको पता है मैंने कितना वेट शेड किया. मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 केजीज़ शेड किया है. एंड जहाँ पे मैं हूँ, मैं ना अब बहुत शेड किया और मैं बहुत शेप में हूँ, और मैं अभी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मैंने और क्या करना है, कैसी डाइट लेनी है, जो भी करना है, मैं आई एम ऑन द वे. सो नोबडी नोज़ माई जर्नी, कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ हूँ और कहाँ जाना है. सो बट देर इज़ अ वे दैट आई कैन मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. that is how it is said that we should not judge anyone. इसलिए जज नहीं करना, ये भी सेल्फ लव का ही पार्ट है. ना ही जज करो, ना ही करवाने दो. सो बिकॉज नोबडी नोज़ कि हमारी जर्नी क्या रही है और हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ हैं तो कैसे हैं, और आगे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करके आई कैन मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. तो इसको बोलते हैं अपने लिए खड़े होना, टू स्टैंड बाय योर ओन सेल्फ बट इन अ नाइसर और पॉजिटिव वे. सो now I know that what are the parameters that show
that I do not love myself. And now I know the definition of self-love as well. So now I have to see whether I love myself or not. I have to check, I have to ask myself that do I take care of my thoughts? Number two, do I take care of my speech? What do I speak for my own self? Third, do I take actions which show that I love myself? For example, sometimes if I keep saying that I do not have time for myself, but I keep loving others. It's okay that I do not love myself, but at least I love everyone around, in the family, in society, at the workplace. I keep on saying such statements. It is very difficult to love others if I do not love myself. Why? Because I have that limited stock of love in me. And when I do not love myself and I keep loving others, what would happen? My stock would get depleted. And after some time, what would happen? I would be totally powerless and I won't be able to love others. This is very important, and this is for sure that it would happen that way. For example, we have electricity supply, power supply, and we have in the summers we have ACs, in winters we have heaters to put on. And what would happen? We have that constant supply of electricity from some source, and we are getting that supply, and it does not matter कि हम 24 आवर्स में कितने घंटे एसी ऑन रखते हैं या कितने घंटे अपना हीटर ऑन रखते हैं या कोई भी अप्लायंसेस वी कैन पुट ऑन फॉर सो मेनी आवर्स, फॉर एज मेनी आवर्स एज वी वांट. But think, if that power supply from the source, it gets disconnected, we won't be able to put on any appliances at our place, in our home, right? So what happens is that it means that if I have to love others, I have to get connected with the source. Now what is that source? That source is nature, God, or a superpower, whatever we can say that, you know. So if we are connected to that source and that supply would be constant to us, and we are just like an appliance that we are able to give that love to everyone around. So this equation is very simple. And second thing is that love, we know it is written in all the scriptures, in all the books, and everybody keeps saying that God is love, love is God. One equation is this. Now God is love and love is power. That is there. This equation is there. Love is power. When I am love, when love is there in me, when I love myself, it means I am powerful. Love is equal to powerful. If there is love in me, I am powerful. And when I am powerful, I would be able to spread that power or that love to everyone around, anyone and everyone. It means if I am get disconnected from the source, it means my that power is limited, and now when I would be using everywhere that power, my power would get depleted. So it is very important to spread that power. First, I have to be fully charged all the time. To understand this, there is one more very beautiful example, that suppose someone is stuck in the mud. कोई कीचड़ में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है और बहुत ज़्यादा कीचड़ है, और
हम सबको पता है कि मड में क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी हिलते हैं तो हम और नीचे धंसते चले जाते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द पर्सन जो कि उसमें स्टक है मड के अंदर. हम मड से बाहर हैं तो हमें ये भी पता है कि वो जो जहाँ पे मड होती है, जो उसके एजेस होते हैं उस जगह के, तो वहाँ पे भी बाहर भी दूर दूर तक मड जो है वो काफ़ी दूर तक फैली होती है. नाउ आई एम देयर आउटसाइड और मैं उस इंसान को बचा सकती हूँ. मेरे को उसको उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचना है. बट एज आई सेड कि मड बाहर भी बिखरा हुआ है और वहाँ पे भी स्लिपरी हुआ है. अगर मैं अपने पैर उसको जो अंदर धंसा हुआ है इंसान उसको खींचने से पहले अगर मैं बाहर अपने पैरों को स्टेबल नहीं करती, फिक्स नहीं करती, तो देर आर चांसेस दैट आई कैन ऑल्सो गेट स्लिप्ड एंड गेट इन टू दैट मड. मैं भी उस मड में फंस सकती हूँ, धंस सकती हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बिकॉज मैं बाहर हूँ, मुझे पहले अपने पैर स्टेबल करने होंगे सो दैट जब मैं उस इंसान को खींचूँ तो मैं उसको खींच पाऊँ, सो दैट मैं स्लिप होके मैं खुद अंदर ना गिर जाऊँ. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इट मीन्स कि हम दूसरे की हेल्प तभी कर सकते हैं जब हम स्टेबल होंगे. किसी की हेल्प करने से पहले या किसी को प्यार देने से पहले आई हैव टू बी स्टेबल, आई हैव टू बी fully charged with that thing, so that whatever amount is needed I can spread to the others. So it is very important to love yourself first, to love myself first, so that I can spread that love or that power, or if I want to serve humanity or people around, I would be able to do that happily. Thank you.